Assalamualaikum. I am Dr. Khan Rumana from Department of Zoology, JT Arts, Science and Commerce College for Women Malegaon. Dear students, I heartily welcome you in my video lecture. In previous video, we will studied about the general characteristics of phylum Porifera. Now, today we study the one example from the phylum Porifera, which is Cycon. First, we see the classification of Cycon. As you know that Cycon belongs to the phylum Porifera, means Cycon is also pore-bearing animal. Its class is Calcarea, means there is skeleton made by calcium carbonate. Its order is Heterocoela. The heterocellous sponges are mainly characterized by the cyconoid type of canal system. Its family is Cystidae and genus is Cycon. This is the diagram of Cycon. फिगर में आप देख सकते हो whole body of the Cycon is perforated by large number of ostia or pore and there is a common base is present और इस base से जो बहुत सारी branches जो होती है वो arise होती है. Now Cycon is a marine sponge which is found attached to the rocks, corals and shells of the molluscas. Cycon जो होते हैं marine water में पाए जाते हैं and they are sedentary in their habitat. They are attached to the rocks. समंदर में जो rocks पाई जाती है sea bottom में उससे attached होते हैं और corals which are made by coelentrates उस पर भी attached होते हैं and sometimes they are also attached to the shells of the molluscas. Cycon is found in the form of branched cylinders. फिगर में आपने देखा है किस तरीके से उनका बॉडी का शेप होता है. तो they are always found in the form of branched cylinders. All these branches are attached to the same base or all the branches are rises from the common base. Even though the body has firm consistency, they also show slight flexibility also. Cycons have minute openings called pores or ostia. पूरी बॉडी के ऊपर जो साइकॉन की बारीक बारीक सुराख होती हैं जिसको ओस्टिया कहा जाता है. At the end of each branch, Cycon has an opening which is called as osculum. तो आगे की तरफ जो है एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको जो है वो ऑस्क्यूलम कहा जाता है. ओस्टिया का काम क्या होता है? दे एब्जॉर्ब वाटर और ऑस्क्यूलम के ज़रिए पानी जो है वो खारिज होता है, एग्जिट होता है. द वॉल ऑफ द साइकॉन इज लाइंड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स विच आर कॉल्ड एज अ पिनेकोसाइट्स. The length of Cycon vary from 2.5 cm to 7.6 cm. The body of Cycon shows radial symmetry or sometimes they may be asymmetrical. Cycons show great power of regeneration. Cycon के अंदर जो वो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. मीन्स अगर उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा कट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो इमीडिएट वहाँ पर नया पार्ट जो है वो तैयार हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है. इसके अलावा जो बॉडी ऑफ दिस साइकॉन इज सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ निडल लाइक स्पाइंस विच आर कॉल्ड एज अ स्पिक्यूल्स. स्पिक्यूल्स फॉर्म द इंडोस्केलेटन ऑफ द साइकॉन्स बॉडी. They are made by calcium carbonate and spicules not only form the endoskeleton, they also act as organs of offense and defense. So dear students, this is about the general characteristics of Cycon. In the next lecture, we will be study about the next example of the Porifera, which is Euplectella.